See, please pay attention, huh? And try to understand. See, this is an easy thing, and this is must for everyone because I have not discussed it with all of you. Okay. In fact, we haven't discussed it yet. We are discussing Lorentz force. Now, what is Lorentz's force? So this is when both electric and magnetic field, when a charged particle is exposed to both electric and magnetic field. Okay. It experiences the forces because of both the fields. Is projected लिखो, exposed की जगह लिखो projected. It should move, right? And it is given by Lorentz's force. ठीक है? So we have, suppose the charged particle is Q, mass is M, velocity is V, field, electric field is E, and magnetic field is B. V is velocity. The force experienced by it is given as Q E vector because of electrostatic force plus Q V cross B because of magnetic force, magnetic field. Right? This is the field experienced by it, and this is called as Lorentz's force. Right? One of the case we have, no, not one of the case, we have seen only when the charged particle was moving in a magnetic field, uniform magnetic field, and we saw, and we wrote the velocity and its position vector as a function of time t on the very first day. We have done that. Today we will see, good evening Ojaswa. So today we will see how this thing works in when both of them are parallel to each other and the velocity is perpendicular to both of them. ठीक है? So इसको लिख लो पहले. First of all, write this. I need space for that. So there are two cases which we'll be learning today. One is, the first case is when electric field is parallel to the magnetic field. And velocity and the projected velocity and the velocity with which the particle is projected is perpendicular to both of them. ठीक है? ये करना है हमको आज. Hi Manasvi, you have left the group. Why? No, sir, I haven't left the group. Oh, you have left the group. You are not there. TPP. I just saw that the message, and that's why I am asking you. See, yesterday only from your number you have left the group. Sir, I'm not using WhatsApp on my number anymore. Okay. So must have gotten deactivated. Then it's okay. So this is the first case. So velocity is perpendicular to both. Sir? Huh?
सर ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बेटा, वो पार्टिकल को फेंकते हैं ना हम लोग, जो क्यू वी क्रॉस बी वाला, वो ड्रिफ्ट नहीं था ना, ओके। दैट वाज नॉट ड्रिफ्ट। ये कहानी है, ये फर्स्ट केस है। एंड द सेकेंड केस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज व्हेन electric field and magnetic field are perpendicular to each other and particle is and the charge is released at rest, and the charge is released at rest. ठीक है. So these are the two things which we will be discussing today. So V is 0, initial velocity is 0 and E is perpendicular to B. इसको लिख लो एक बार and then we will, हम लोग सॉल्व करने चलेंगे इसको, ठीक है? प्लीज राइट इट. क्षितिजा आई कि नहीं आई? वो सर मैं। हाँ, क्षितिजा सेम लिंक है बेटा, इसको सेव करके रखना है ना? हाँ सर। ग्रुप में रहता है, ऊपर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्विंग 12 स्टैंडर्ड, न्यूमेरिकल सॉल्विंग 11 स्टैंडर्ड. सर कुड यू प्लीज repeat what the notations denote in the force. भाई Q is charge, E is electric field, V is velocity with which it is projected and B is magnetic field. हो just all of you done with it? Written? 1 second, sir. Done, sir. ठीक. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग शिव. यस इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से. यस जिन लोगों सर. ने अभी नया ज्वाइन किया सब ले लो स्क्रीनशॉट इसका. सर हम नया लोग चैप्टर है सर. नहीं नहीं नहीं, नया नहीं है बेटा, वो जो लास्ट पिछली क्लास में बोला था ना मैंने, कंक्लूड Relays. करेंगे हम लोग करके, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल रहेंगे, है ना? मतलब दोनों का इफेक्ट देखना है हमको. लास्ट क्लास में बोला था ना यार, हाँ सर. वही है ये लॉरेंट्ज फोर्स होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फोर्स हम वेक्टर सम करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई वेक्टर होगा. मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी होता है. तो पहला केस है व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B. इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका. चलो, on a count of 3, 1 2 3, those of you have joined just now, आओ जरा आप. फर्स्ट है when velocity is along, let's say it is along which axis? I axis. ठीक है. So it is V naught I cap. इस velocity से उसको प्रोजेक्ट किया. Electric field and magnetic field, both of them are along. So I'll write it separately. E vector is E naught J cap. B vector is B naught J cap. This is a classical analysis thing, right? एकदम तुम सोचो क्या क्या होगा अभी. This velocity
this velocity, because of this, the charge is q and the mass is m, right? Because of this velocity and this magnetic field, that particle will start moving in xz plane. Yes or no? अभी भूल जाओ कि E है वहां पर. Just forget about E. What did you understand? The particle is moving along xz plane. Yes or no? All of you. I want an Yes, answer. sir. Yes, Huh? sir. ठीक है. So this is the xz plane we have, and the particle is projected at this place. Right? This is x-axis. The horizontal one is x-axis. And this is I am taking it as z-axis, right? तो z-axis का मतलब क्या हुआ? Z मान लो उसमें क्या है? Now, because of these two forces, sorry, the force along the magnetic force, so that is F is equal to Q V naught B I cross J. The particle started, the force is acting along plus K cap, right? So this charge particle will go in this plane. All of you, please pay attention. Yes or no? This is how it will move. आप लोग को हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ? Sir. Yes. Sir. Right? Kshitija, Yes, sir. Rajshri, all the new students. Ojas, Astha, Lakshya. Yes, sir. So this is the velocity vector. This is the velocity vector in the xz plane. I am just not considering E vector, right? Abhi isko chhod dete hain. So this is V naught only. The magnitude of speed remains, the magnitude of velocity remains the same, right? And since it has traveled some angle theta, just see what is happening. So this is theta. This is theta. I hope it is. हाँ, ठीक है. Okay. So the velocity vector in xz plane is what? I have not considered this j cap, huh? In xz plane, देखो इतना ही सिंपल है ये, तुमको आराम से समझ में आएगा. In xz plane, how will the velocity look like? Velocity is given as v naught. Along x-axis, it is v naught cos theta. And along y-axis, it is v naught sin theta. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is v naught cos omega t I cap plus v naught sin omega t j cap. It's v as a function of time t in the xz plane. ठीक है बच्चों? And what is omega? Omega is qb by 2. नहीं, क्या था वो? qb by m. Sorry. Omega is qb by m. You remember we have done this in the very first lecture. Hello. याद है? Omega. Yes, sir. What is time period? अगर याद नहीं है तो याद करो भाई. अभी तो खत्म, अभी तो पढ़ाया. Time period is it's 2 pi m upon qb. Remember? Omega is 2 pi by time period. And that is what? qb by m. Clear hai? All of you? Yes, sir. Shrija, Sanvi, Ayushi, Astha, Laksh, Yes, sir. Vivan, Yes, Rakshit, sir. Yes, sir. Shiv. Yes, sir. ठीक है. Now let's bring. Acha, okay. What about the displacement? The position vector.
of the particle. I am not considering this electric field as of now. I'm just ignoring it as of now, right? So it's not there for us. What about r vector? So this is r vector, right? And we have already written it on the very first day. So this was theta. This is 90 minus, this is theta. This is क्या होगा यार ये एंगल क्या होगा जो भी है. So x-axis is r sine theta. X-axis is the radius of the circular path, r sine theta I cap plus r times 1 minus cos theta j cap. Sorry, it's not j cap. Huh? Sorry, I'm very sorry. This is not j cap. This is k cap. कैसे निकाला मैंने ये? तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये है और दूसरा ये है. Can you see this, all of you? One is this one and the other one is this small one. तो ये लेंथ कितना है? If this is r sin theta. And this is how much? This is r cos theta. So it's r times 1 minus cos theta is this. Yes or no? Yes, sir. ठीक, ये हो गया r वेक्टर. अब क्या आया बच्चों, देखो. Because of electric field along which axis? Along y-axis. What is the acceleration of the particle? Or what is the force acting on the particle? It's QE. Yes or no? So what will be the acceleration along y-axis? This is force along y-axis. This is Q E naught J upon M. Hi Anna, is it a constant or a variable? Kshitija, is it a constant or a variable? It's a constant, sir. It's a constant. अच्छा चलो, किसी को नहीं, किसको नहीं समझ में आया? एक सेकंड, किसी ने मुझसे लिखा राजश्री को समझ नहीं आया. एक सेकंड रुको. राजश्री देखो बेटा, क्षितिजा तूने अभी तक लिख के नहीं भेजा है बेटा मेरे को. तेरे को कौन कौन से दिन क्लास नहीं हो रही है ना, वो प्लीज लिख के भेज, तो मैं उसको अरेंज करूंगा इधर उधर. हाँ सर, एक्चुअली मैं खुद का व्हाट्सएप नहीं रखती ना, इसलिए वो अरे तो मम्मी के फोन पे टाइम एक नहीं बार मिला. मम्मी से ले लो फोन भाई. हाँ. ठीक है, देखिए राजश्री जी देखिएगा. द पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड इट हैज रीच्ड दिस पॉइंट, राइट? ये ओरिजिन था बेटा, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हुआ. हाँ या ना राजश्री? इसका x कंपोनेंट ये हो गया और y कंपोनेंट हो गया, दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट. राजश्री जी हाँ या ना? हेलो हेलो हेलो, ये है भी कि नहीं है? मैं इसको समझा रहा हूँ. और है तो ये राजश्री समझ आ रहा है बेटा? अभी तक जो बोल रहा हूं मैं सुनाई दे रहा है तुमको? चलो, this length is r, right? This length is r. The angle which it has traveled is theta. So this is r cos theta. So this length is what? This is r times 1 minus cos of theta. Now what about this length? This is this length. So this is how much? This is r sin theta, because this is r. ऐसे लिखना था इसको, ठीक है?
That's why I wrote this r as r sine theta I cap plus r times 1 minus cos theta k cap. Now this acceleration is constant, right? So what about velocity along y-axis? Velocity along y-axis is what? It's at, because u was 0. So this is ay into t, and this is what? Q e naught t by m j cap. This is vy. What about sy? It is half a, which is q e naught by m t square j cap. Clear, all of you? Yes. This is, I have just ignored magnetic field thing, considering only electric field. So substitute. So complete velocity is how much? Complete velocity weighs this velocity. इसको ना नाम दे देते हैं, पता है? This is, say, the net velocity is the vector v and plus vy. Okay. And what about displacement net? Or sorry, net position vector, not displacement. It's net position vector. It's r plus this one, sy vector. I hope all of you understood this. When now in this case, what is happening is the vy is continuously increasing, sy is continuously increasing. Yes or no? So this is a circle of fixed radius but increasing pitch. उस दिन किसी ने पूछा था ये मुझसे, किसने पूछा था, मैं भूल गया नाम उसका. In the previous session, someone asked this. Who asked this? This is a case of helical path. This is a case of helical path with increasing pitch. The distance is increasing. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. लिखो इसको जल्दी से, कॉपी करो. Excuse me, sir. प्लीज बोलिए. Sir, how we got to know that force and area acceleration is perpendicular to each other at all the moments? एक मिनट फिर से बोलो जरा, तुम क्या बोल रहे हो? How we got to know that force and acceleration is perpendicular to each other every time? Where? Like for the circular path to occur. Force is qv cross b. Force is qv cross b. Yes or no? Yes, sir. So cross product में क्या होता है बेटा? Force Like, perpendicular it is होता है कि नहीं v और b के? Yes, sir. तो है. Okay, so we don't need to check perpendicular to the acceleration. I नहीं thought. नहीं, एक्सीलरेशन तो y एक्सिस वाला अलग हुआ ना. y एक्सिस वाला छोड़ दे अभी तू. Okay, sir. y एक्सिस तो अलग से किया ना हमने. Yes, sir. xz का हमने अलग किया और y एक्सिस वाला अलग है. Yes, sir. Understood or not? Yes, sir. Copy karo, and once you are done, just type done in the comment window.
Done? All of you done? Sir, 1 minute, sir. Once you are done, just write done in the comment window, okay? Yes, sir. चलो सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। क्षितिजा को समझ आया कि नहीं आया ये? समझा सर। Second case is when E and B are perpendicular to each other and particle is released at rest. ठीक है, क्या होगा देखो, चलो बताते जाना मुझे, ठीक है? E is along, please pay attention, E is along J cap and B is along K cap. What will happen? And the particle is released at rest. बच्चों बताओ बे। हेलो शिव, बता बेटा क्या होगा इसमें? So, ये पार्टिकल है अपना, इसको छोड़ा है अभी हमने, अब क्या करेगा ये? सबसे पहले क्या होगा? विल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट शिव? no, नो, वेरी गुड। व्हाई इट विल नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट? so perpendicular is here. नहीं नहीं, जीरो है, जीरो, वेलोसिटी जीरो है ना अभी, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगाएगा? सो इट विल नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, अंडरस्टूड और नॉट? yes, What about electric field? Will it start exerting a force on it? yes. Of course, yes. Now what will happen, Pranav? After this, what will happen? Sir, like, will it gain velocity and then like magnetic field? It will have some velocity along y-axis. Then what will happen? Then magnetic field. Then magnetic field starts exerting a force on it. As Yeah. soon as it gains some velocity along y-axis, the velocity is perpendicular to magnetic field. So that will now start exerting a force on it. Right? So where was the velocity? It was along y-axis. Right? Now that velocity is perpendicular to magnetic field. Right? So J cap cross K cap. The force is acting, the force exerted is in which direction? X-axis. Yes or no, the magnetic force? All of you. Yes, sir. Yes, sir. Just try to process what I am saying. Force will be only along the direction of field. Yes, of course, because of electric field, the force is only along the direction of that field. So now
the particle has a force along y axis, the particle has a force along x axis, x and y. So the velocity of the particle will be in which plane? x, y, y, z, x, z. किस plane में होगा? मनस्वी जी बताइए. Sir, can you repeat the question? The velocity of the particle will be in which plane? X-axis. X and Z. It will be along X and Z. See, sorry, not Z, not Z. Yeah, X and Y. no. X and Y. Y because of this electric field and Z because of the perpendicular magnetic field and velocity. So, all of you understood this or not? So, if this is X plane, this is Z plane, the velocity, the particle will move in this direction. बच्चों समझ आया नहीं आया तुमको? Yes, sir. Not Y is Y Z है भाई, Y है. This is Y, right? So let's write the velocity as, we can easily write the velocity V vector as Vx I cap x component plus Vy j cap. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The particle is moving along x and y axis in the xy plane. So now what will be the force? The net force acting on the particle at any instant will be what? Q E vector, which is E naught j cap, plus V, which is Vx I cap plus Vy j cap, cross B k cap. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, Please sir. say yes or no in every Yes, step. sir. Yes, sir. Yes, sir. जब मैं पूछ रहा हूं तो तुम जवाब भी दे दो. So now I cross j is what? I cross k is what? I cross k is minus j. So when we segregate it, what we get is E naught minus Vx b j cap plus Q Vy b naught I cross j cross k is what? I cap. Yes or no? All of you. Yes, sir. So, So what about acceleration now? It's force upon mass. So this is Q upon M E naught minus BVx J cap plus Q by M B naught Vy I cap. Right? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो प्लीज. If you have doubt, ask. sir, how we got to know the force due to magnetic field? Because of this electric field, what is the direction of velocity when the particle was released at rest? Along y-axis. Y-axis. So when there is a velocity along y-axis and magnetic field is along k cap, what is the direction of velocity? I cap. The force. I cap, right? Yes, sir. तो आया ना I cap में velocity इसकी एक. Yes, sir. I cap में आई कि नहीं आई velocity? इसके कारण y में थी, इसके कारण x में है. ठीक है? Yes, sir. So now all of you agree to this or not? So we have acceleration A as, this is acceleration along x-axis. And this is, sorry, not x-axis. This is acceleration along, there are two accelerations, AX and AY. Check करो इसको. AY जो है वो क्या है? AY is Q by M E naught
Now the solving starts. Please don't copy it until you understand it. Nahi to this is a waste of your time. AY is Q by M E naught minus BVX. And what about AX? AX is Q B naught by M into VY. I hope all of you understood this. Yes or no? सर Yes, sir. बोलिए. सर एक बार सेकंड स्टेप वापस समझाइए ना. कौन सा? सर जो सेकंड इक्वेशन दिखी है ये. फोर्स की. हाँ हे देवी. Q naught Q E naught J cap तो है ही है. I cross K क्या होता है बताओ? शरण्या J जी. cap. I cross K होता है माइनस J cap. बोलो हाँ या ना. यस सर. हो गया. तो वो माइनस J cap आया. देखो I और I और K में क्या था? VX B naught था ना. तो VX B naught माइनस K J cap आ गया वो. ठीक है. देखो ये माइनस दिख रहा है. हाँ सर समझ गया. Now we want to write velocity as a function of time t. Even we want to write position also. चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसमें. Okay. This is dvx. All of you please pay attention. This is how we need to solve it. dvx is equal to q b naught by m vy. Differentiate it once again. What you get is d2 vx upon dt2 is equal to q b naught by m into dvy by dt. Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक तो ये है. दूसरा इसको भी करो. This is dvy by dt. This is q by m E naught minus bvx. Now when we differentiate it again, what we get is it's minus qb by m dvx by dt. Now it's better to choose this one because when we are choosing this one, there will be an additional constant and negative sign here. So this doesn't work for us. Isko hata do. We will first write vy and then we will write vx. Now what about this? This is acceleration along x-axis, right? Hello. Yes, sir. So this is d2y upon dt2 and this is minus q. This is b naught, b naught, b naught. Q b naught by m whole square into vy. हाँ या ना? ये डी वाई नहीं है यार. ये दिस इज नॉट वाई, दिस इज वी वाई. हाँ यही गलती कर रहा था. बोलो भाई ये हुआ या नहीं हुआ? सबको समझ आया नहीं आया? ये क्या लिखा है मैंने यहाँ? No, I understood. You understood, Lakshit? Yes. Anybody else who is having any doubt? Shiv Kalyan Shetty, Shrija Das, Tanay Gupta, Vivan Kesarwani, Lakshit, No, sir. Astha, Anjali, No problem, sir. Datta. No, sir. Acha, have you seen this type of equation earlier? Anybody who has seen this type of equation earlier in physics in your 11th standard portion? Sir, I have seen, but I'm not able to recall the chapter's name. Acha, what was that equation? What was that equation? Sir, I'm not able to get, sir, but I'm able to little bit remember, sir. सर काइनेटिक्स में था क्या? हाँ हाँ, क्या क्या बोला तुमने बेटा? काइनेटिक्स में था क्या वो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx by dt
और इनटू वेलोसिटी कुछ ऐसे। SHM. SHM. You remember acceleration A is equal to minus omega square x, all of you. This is condition Yes, for sir. SHM. And this is what? It's d2x upon dt2. This is equal to minus omega square x. The solution for this double degree differential equation is x is given as a sine omega t plus delta. याद है या नहीं है? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. This was it, right? So here also we have, in place of x, we have Vy, right? So Vy will be written as, it's a sine of omega t plus delta. Now what is omega here? Omega is q b naught by m. I hope all of you understood this. Yes or no? Hello? Yes sir. But we don't know the value of a, we don't know the value of delta. Okay, sir. कौन है? So how we got the dvx by dt as vy? Not Vy. ये. It was dvx by dt was ax. Yes sir. We substituted this here. That's why this q b naught by m become whole square. And Vy is left from here. Okay sir. So Vy is equal to a sine omega t plus delta. At t0, what was Vy? It is 0, right? Yes or no? We want to find what is the value of a. We want to find what is the value of a and what is the value of delta. So at t0, so we are using the initial conditions which we are aware of. At t0, Vy is 0. So substitute the values here. We get 0 is equal to a sine omega t. बोलो रे बच्चों हाँ या ना? t0 भी हो गया ना? ये भी हट गया. This is a sine delta, right? From here I get delta as 0. All of you understood this or not? Understood. Hello. Yes, sir. Rest Yes, of you ask. भाई शुरू से बोलो. शुरू से कौन है? आस्था, अंजलि, दत्ता, क्षितिजा, लक्ष्य, मनस्वी, लक्षित. एक्सक्यूज मी सर. कौन हो तुम? सर हाँ बोल. आपने इसको रिलेट कैसे किया है वी वाई वाले ये जो इक्वेशन है एसएचएम से, और ये इसको मैंने इसकी ये मतलब ये पूरा तुम सो रहे थे क्या जब ये बता रहा था मैं? नहीं, ये तो पता है मेरे को. ये अबे तो पता है तो फिर वही तो रिलेट किया है. देखो d2y अपॉन dt2 लिखा था वहां. बोलो हाँ. हाँ. माइनस ओमेगा स्क्वायर Vy लिखा है वहां. बोलो हाँ. अच्छा. हाँ. और ओमेगा क्या था? q b नॉट बाई m लिख दिया मैंने वहां पर. बताइए सर. अच्छा, इसको डबल डिफरेंशिएट करके तो यही बनता है. ठीक है सर. अरे भैया कंपेयर करना है महाराज, डबल डिफरेंशिएट नहीं. नहीं, इसको तो डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो बनेगा. कौन डिफरेंशिएट किसको? डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को. किसको डिफरेंशिएट करना है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तभी इसको? तो आएगा. हाँ. ये बनेगा. ये बनेगा. इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ये बनेगा. तो यही बोल रहा है ना? अबे कैसे बन जाएगा सर? क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी. अरे तुम सर अबे गधाऊ, ये एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है. तो सर आपने इसको कैसे कंपेयर करा, यही नहीं समझा. क्या चमन हो बे? इधर देखो, ये इक्वेशन है या नहीं है? हाँ. और एक ये इक्वेशन था या नहीं था? जल्दी बताओ. हाँ. तो सर यहाँ पे x और वो वी वाई डिफरेंट चीज हुआ ना. हाँ तो डिफरेंट हुआ ना. तो मैं कब कह रहा हूँ सेम है? पर सॉल्यूशन तो सिमिलर हो सकता है ना. साइन का ही सॉल्यूशन होगा ना. सॉल्यूशन साइन का ही होगा ना. अच्छा. ओमेगा की वैल्यू क्यू बी नॉट बाई एम हो गई. यहाँ पे ओमेगा दूसरा कुछ था. अभी मुझे ए निकालना है और डेल्टा निकालना है. अच्छा. पर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो कि नहीं गणित में? नहीं, अभी नहीं पढ़ा. हाँ तो कोई बात नहीं. सॉल्यूशन ये होता है इसका. ठीक है. So what does that quantity represent?
Which quantity? d2 Vy by dt. This is just something double derivative of v only. That's it. Actually, it is called as jerk. सच में jerk बोलते हैं इसको, हाँ? So, like that is like differential of like acceleration. Yeah, like, yeah. respective. It is rate of change of acceleration is called as jerk. पर उससे कोई फालतू ये सब उधर मत जाओ अभी, है ना? ये सब अच्छा लगता है बोलने में, बट वो बेवजह की चीज है. So Vy is this. Delta becomes 0, right? So now we have Vy as what? It's a sine omega t. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Now we have to find a. How will you find that? So what you do is differentiate this Vy with time. So it's dVy by dt and this is a omega cos omega t. इसमें किसी को doubt है? Anybody is having any doubt? No, sir. So this dy by dt is ay and this is a omega cos omega t. Understood all of you? Hello, hello, hello. Yes, sir. Hello. Now we have this equation ay and this equation ay. Check karo. At t is equal to 0, at t0, what is ay? From here, ay will be a omega. Yes or no? And from here, ay will be Vx is equal to 0. Vx is 0, right? So ay is q e naught by m. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now equate these two equations. From here you get a. And what is that a? Q e naught by m omega. मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया नहीं आया तुमको? Understood, sir. Understood, sir. So that is देखो, E naught by B naught. Right? है? So like omega, we can't replace it. We can replace it omega. It was what? Q b naught by m. Yeah. So let's write it na. So this was your a. यार ये जगह नहीं होती ना, बड़ी मुश्किल होती है ये. रुको रुको रुको, अभी बनाते हैं जगह, सब बनेगा. ठीक है. And what was omega? It was q b naught by m. So substitute it here. This is q e naught by m. This is q b naught by m. ये cancel हुआ. This cancels out. We are left with e naught over b naught. So this is the amplitude A. Got it? So what was V then? So we get Vy as what? We get Vy as E naught B naught sine omega t. बच्चों समझ आया या नहीं आया? जल्दी बोलो भाई. This is Vy. Once you know Vy, you can easily find Vx. Got it? Hello, hello, hello. Yes, sir. लिखो Yes, इसमें. sir. शिव समझ आया नहीं आया यार? शिव, मनस्वी, Yes, sir. शरण्या. Yes. Yes, sir. हाँ बेटा. Yes, sir. सर why did we equate Vy to a sin omega t? वो तो 0 था ना? T0 पे सुनो सुनो मेरी बात सुनो. हमेशा 0 नहीं होगा ना बेटा वो. देखो ये जो है at T0 only it is 0. Yes or no? बाकी किसी भी टाइम पे तो ये है वेलोसिटी. देखो है ना? तो हमें तो किसी भी टाइम पे लिखना है ना, तो इसीलिए किसी भी टाइम पे हमने ये लिखा. फिर अंडरस्टूड? वी आर यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड ए. हमको ना ए और डेल्टा नहीं पता था, तो वी आर यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस की व्हाट वाज द इनिशियल कंडीशन, वेयर वाज द वेलोसिटी हैविंग सम स्पेसिफिक वैल्यू वेयर वी कैन
compare it or substitute its value and get the other variables. ठीक है आस्था? Okay, sir. Your आस्था ना? Yes, sir. हाँ 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 ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो. देखो ये this is the crux of your, this is the, see वैसे तो this motion of charge particle in magnetic field seems to be an easier thing, but when this thing comes in, ये next level है. And it's amazing, amazing. मैं बता रहा हूं तुमको, इसको इतना मजा आता है ना ये सब करने में. You'll enjoy it. Those of you whose area of interest is in this domain, नहीं तो फिर तो क्या है, बाकी तो लिख लो बस. But you should know how to play with both electric and magnetic fields. चलिए इसको लिखिए और मुझे बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए, मैं बैठा हूं आपके डाउट ठीक करने के लिए. सर ये वी वाई इक्वल टू ई नॉट बी नॉट साइन ओमेगा टी समझा दो फिर से. वी वाई तेरे को ये Yes, नीचे sir. समझ में आया, ये जो लिखा है a इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा लिखा है, वो समझ आया? हाँ वो ठीक है. तो अब वी वाई क्या है? वी वाई क्या है तेरा? डेल्टा तो 0 था, तो वी हाँ. वाई क्या है? ए साइन ओमेगा टी है या नहीं है? देख बीच में लाल से लिखा हुआ है. अच्छा हाँ. उसकी जगह पे जब तू ए की वैल्यू रखेगा जो कि है क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे क्यू बी नॉट बाई एम रखेगा, तो इट बिकम्स ई नॉट बाई बी नॉट. ठीक है ठीक है. तो ए वहां से आ गया बेटा. ठीक है. ओके सर. हाँ देखो क्लास नहीं होगी ना तो मैं मेंशन करूंगा तुम लोग को ग्रुप में. ठीक है, क्लास उसके अलावा क्लास है हमेशा. सर हम्म सर जब हम t इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है, तो जनरल इक्वेशन जब हम लिखते हैं y के लिए तब डेल्टा आना चाहिए ना? क्यों? इस केस में क्यों? व्हेन इट इज, सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इस केस में नहीं है इसके पास कोई फेज एंगल, फेज कांस्टेंट इनिशियली. when you are when the object oscillates, starts oscillating from mean position, does it have any delta? No, it doesn't. नहीं. हाँ भाई. So, हम्म you spoke about the SHM equation, right? Like that was just to say that the two equations are similar. As such, there is no relation between the two equations, right? हाँ obviously. Okay. Obviously, I just wanted to draw a similarity between them. Okay, sir. Hmm? Huh.
I hope you're done with it. All of you done? Acha, please Yes, write sir. done in the comment window once you are done, okay? Datta, understood? Datta, hello, hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is not audible. Why? Sir, no. हाँ, now it is okay. अंजलि समझ आया बेटा? अंजलि हाँ सर, थोड़ा सा ऐसा वेग है, बट आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग। आई ये ऐसे जॉइन। नहीं, ऐसे क्यों वेग? तुम क्यों छोड़ना है वेग? तुम मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया तुमको इसमें? क्यों पूछती क्यों नहीं हो तुम? नहीं सर, आई जॉइंड इन द मिडिल ऑफ द सेशन, सो आई विल वॉच। क्यों ऐसा आज? सर आज क्लास थोड़ा खिंच गई थी। वो 9:30 को एक तक एक क्लास था, बट इट एंडेड एट अराउंड 10। ओह, तब फिर ठीक है, तुम आराम से देखो, क्योंकि देखना और फिर मुझे बताना, ठीक है? हाँ सर। I'll put this lecture in Gold, Physics Pro Gold, and Combined Electric and Magnetic Field heading, under the Combined Electric and Magnetic Field heading, okay? Okay sir. चलो, if all of you are done, कर लिया, लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो ये आज के लिए इतना ही था, and this concludes your this lecture, this chapter, magnetic field, right? Motion of charge particle in magnetic field. We have seen every aspect of it. Please complete HC Verma. Okay, concepts of physics. Start solving it. Solve at least 10 to give half an hour to 1 hour to this entire process of physics. At least half an hour daily when you don't have a lecture. If you have a lecture, half an hour is more than enough. Sorry, 1 hour daily if you don't have a lecture, half an hour when you have a lecture. इतना टाइम दो, ये सब्जेक्ट तुम्हारा तैयार हो जाएगा अगले 3 से 4 महीने में, गारंटी. And I want all of you to start taking some tests. ऐसा मैं चाहता हूं. How many of you have that access to testing portal? तो don't have access to testing portal. ओजस्व का नहीं होगा, आस्था का नहीं होगा. तनय गुप्ता, तुमको 4 बार तुमको यूजर आईडी पासवर्ड दे चुका हूं मैं खुद. मेरे पास वो तो है, लेकिन मेरे पास पोर्टल थोड़ी ना टेस्ट देने का। मतलब फिजिक्स पर गोल्ड और वो सब तो मैं एक्सेस करता ही हूँ। तो टेस्टिंग पोर्टल क्यों नहीं है तेरे पास? तो पता नहीं, मैं बात करता हूँ, रुको. ठीक है, नहीं ये बाकियों का तो नहीं है, मैं समझ गया. ये कुछ बच्चे नए वाले बच्चों का नहीं है. तुम्हारा आज कल तक आ जाएगा सारा, ठीक है? तो मैं भी चेक करता हूँ, मैंने जब भी 2-3 बार चेक किया है वो दिखाता है योर अकाउंट हैज नॉट येट बीन क्रिएटेड. ऐसे मत करो. तुम अपना आईडी पासवर्ड जो दिया था उसको चेक करो. नहीं है तो मुझे बताओ, मैं ठीक करता हूँ. हाँ सर, मैं फिर से ठीक है. हाँ, और नाउ सी, अभी तक मैं तुम लोग को प्रेशराइज नहीं करता था. आई वाज नॉट एक्चुअली आस्किंग यू टू टेक द टेस्ट बिकॉज यू आर वेरी बिजी विद इट. पर अब नाउ द थिंग्स आर, you need to take at least one test. Start with one. Either on Sundays, I'll be putting up, there are topic wise tests are there, right? So you can take chapter wise test, but I'll be putting up one test, cumulative test topics, ठीक है, of what we have done recently. मतलब the current topics which are going on, I'll mix those topics and I'll give you a test. ठीक है, ये करना है. ये आदत धीरे धीरे आदत आएगी ना बेटा, तो 2-3 महीने में तुम लोग ठीक होने लगोगे. तो शुरुआत करो, ठीक है? स्टार्ट. चलो, आज के लिए इतना ही है. बाय, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, sir. सर